Guys, idioms is the inevitable part of the English language and it has a significant role in English. So this lecture is consist of hundreds most important and very common idioms. So let's start. To add insult to injury, it means to intensify a person, किसी बंदे को और गुस्सा दिलाना. To be born with a silver spoon, it means to be born in a rich family. A bolt from the blue. A bolt from the blue means कोई नागहानी आफत, an unexpected disaster. To blow one's own trumpet, it means to boast. A bone of contention, फसाद की जड़, झगड़े की वजह, cause of quarrel. To burn one's finger, to suffer. To beat black and blue, it means to beat mercilessly, बिल्कुल बेरहमाने तरीके से मारना. To cast an aspersion means to bring discredit. To cry over spilt milk means to feel sorry for what has happened. जो काम ऑलरेडी गलत हो चुका हो तो उस पर अफसोस करने के इजहार को कहते हैं to cry over spilt milk. To cut a sorry figure, it means to make a poor impression. To die in harness. To die in harness means to die while doing one's duty. ड्यूटी के दौरान में मर जाने को कहते हैं to die in harness. To end in smoke, it means to fail. To end in smoke, to fail. To go to the dogs means to be ruined, तबाह हो जाना. To hang in the balance means to remain undecided. To hit the nail on the head, it means to do the right thing at the right time. To hit the nail on the head. To hold water. To hold water means to sound logical. To lie no stone unturned means to try one's level best, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना. To lie from the hand to mouth means जिसका गुजारा ही चल रहा हो. To lie with great difficulty, बड़े मुश्किल से बस गुजारा ही चल रहा हो. To make up one's mind, to decide, फैसला कर लेना. To see eye to eye with. Eye to eye with means agree हो जाना. To play ducks in darkness means waste, ज़ाया. To put the cart before the horse, जैसे बैल के सामने गाड़ी को लगाना, तो उल्टा काम करना. To do a thing in a wrong way. To have too many irons in the fire means to have too many things in hand, जैसे उंगलियों में बहुत ज़्यादा सामान हो. To have too many irons in the fire. To read between the lines means छुपे हुए मकसद को समझ जाना. To try to understand the hidden meaning. To turn over a new leaf, it means to change for the better. किसी अच्छे काम के लिए change इख्तियार कर लेना. To take the bull by the horns, it means बहुत मुश्किल काम को बहादुरी से कर लेना. To face difficulties boldly. To win laurels means to distinguish oneself, खुद को मुनफरद साबित करना, लोगों से तारीफ कहलवाना. To win laurels. At daggers drawn means at enmity or fighting. Black and white means in written form. By leaps and bounds, very fast, jaldi se. In cold blood means deliberately, kasdan. Laid up with, confined to bed, बिस्तर तक महदूद हो जाना, बेड तक महदूद हो जाना. Laid up with. Ins and out means full details. A black sheep means scoundrel, a bad person, बुरा शख्स. A cook and bull story means an absurd tale, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी. A gala day means a day of festivity, a holiday with rejoicing. A hard nut to crack means a difficult person or problem to deal with, कोई मुश्किल काम को संभाल लेना. A hard nut to crack. A turncoat means one who change one's opinion or party, जो अपने opinion और party को बदलता रहता है उसको a turncoat कहते हैं. A fool's paradise means अहमकों के जन्नत में रहना, in a state of happiness founded on vain hopes. Beat a retreat. Beat a retreat means to retire before the enemy. To be on the horns of a dilemma means to have a choice between two equal evils, दो
मुसीबतों के बीच में से एक को पसंद करना, टू इन द हाउस ऑफ ए डिलेमा। To beat about the bush means approach a subject in a roundabout method. मुख्तलिफ बहाने हीली बहाने करना, मेन टॉपिक पे नहीं आना। Bury the hatchet means नफरतों को ख़त्म करना, to make peace. By bit fits and start means irregularly, बेकायदगी से। By fits and start. Capital punishment death punishment को कहते हैं। By hook or by crook means जायज़ और नाजायज़ किसी भी तरीके से। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई फेयर और फोल मीन्स। ईट हम्बल पाई मीन्स टू फेस ह्यूमिलिएशन। हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू एक्ट अनफेयरली, कोई बहुत ज़्यादा नाजायज़ कर लेना। इन एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स बिल्कुल कंप्लीट तरतीब में होना, इन परफेक्ट ऑर्डर। लीव वन इन लर्च मीन्स टू डिजर्ट इन डिफिकल्टी। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स टू कन्फेस फुली वंस फॉल्ट, अपने गलती को मुकम्मल तस्लीम कर लेना। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू निप द इवल इन द बड, किसी गलत काम को शुरू में ही मिटा देना, ख़त्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय एन इवल इन अर्ली स्टेज। पिक होल इन अदर कोर्ट मीन्स टू फाइंड फॉल्ट विद इन अदर, दूसरों में गलतियाँ ढूंढना। पिक होल्स इन अनदर कोर्ट। Scot free means to go unpunished, सजा के बगैर चले जाना, scot free. Smell a rat means to have a reason of suspect, कोई मशकूक चीज़ नज़र आ जाना, smell a rat, शक हो जाना मतलब। Through thick and thin means through every difficulty. True to one's salt means faithful, वफादार, नमक हलाल, faithful to one's master. To turn the corner means to begin to improve. To turn the corner, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए शुरुआत, नई तरह से शुरुआत करना। To turn the corner. With a grain of salt means to accept a statement with doubt as its complete true. With a grain of salt. Worship the rising sun means to respect one rising in power, जो भी चढ़ते हुए सूरज को सलामी करना, जो बंदा पावर में हो उसकी तरफ हो जाना। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन। ए हरकुलियन टास्क मीन्स बहुत मुश्किल काम अंजाम देना, बहुत मुश्किल काम। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क। ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स इन अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पे होना। ए लीप इन द डार्क मीन्स एन एक्ट ऑफ विच वी कांट फोर्स consequences. A thorn in one side means a constant source of annoyance, गुस्से की एक मुसलसल वजह होना, मतलब एक साइड पे आपको मुसलसल कांटा चुभना। A thorn in one side. To be at once big and call means to be at once big and call. It means under one's absolute control, किसी के मुकम्मल कंट्रोल में होना। Bread and butter means of subsistence, रोज़ी और रोटी। Burn one's finger means to get into trouble, मुसीबत में फंस जाना। Burn one's finger. Burn the candle at both sides means फजूल खर्ची करना, मोमबत्ती को दोनों साइडों से जलाना। Use of too much energy. To cut the Gordian knot को काट करना, इट्स मीन्स कि एक बहुत मुश्किल और पेचीदे मसले को हल कर लेना। To solve the difficulty. Cut and dried means ready-made. Feather of one's own nest means to make money with illegal way, unfair means. To fish in troubled water means to do something under very uncompromising circumstances. To give oneself airs means affected manners. To give the devil his due. To allow even a bad man the credit due. To hang by thread means to be in a critical condition, सख्त हालत में होना। A henpecked husband means a man habitually snubbed by his wife. Henpecked husband, जोरों का गुलाम। Hush money means money, वो पैसा जो किसी को रिश्वत के लिए दिया जाता है।
money given as a bribe to hush or make one keep silent. Kick up arrow means make a great noise, बहुत ज़्यादा शोर मचाना. Kick up arrow. To let the cat out of the bag, किसी राज से पर्दा उठाना. To reveal a secret. Null and void means cancel हो जाना. Null and void, not valid, of no effect. On the spur of the moment means at once, on the spur of the moment. Pay one back in one's own kind means to treat in the same way as one has been treated. किसी को इसी तरह बर्ताव करना जिस तरह उसने किया हो. Put in cold storage. Put in cold storage means to forget or neglect something. किसी चीज़ को या भूल जाना और या नज़रअंदाज करना. Pull wires. Pull wires mean to manage the show by secret influence. Read between the lines means to hit at the real meaning. Sit up the fence. Sit on the fence means बाड़ के ऊपर बैठ जाना, किसी की तरफदारी नहीं करना, अनडिसीजियो रहना. Sit on the fence. To avoid taking side. To remain neutral. A square deal means इंसाफ करना, justice. Sword of Damocles mean treating danger. To take up the gauntlet, to accept the challenger. To take up the gauntlet means challenge को accept करना. To eat one's heart out. To eat one's heart out means to suffer silently, bitterly. Between the devil and the deep sea. दो मुसीबतों के दरमियान में फंस जाना. Between two dangerous, equally harmful. A sweet tooth. A sweet tooth means a liking for sweet meat. A dark horse. A dark horse means an unknown person. A bottleneck. A bottleneck means anything that cause delay. A bottleneck. To put one's foot down. To put one's foot down. To show determination. A wet blanket. A wet blanket means a grumbling, depressing person. A wet blanket. To throw up the spongy. To throw up the spongy means to acknowledge defeat. शिकस्त को मान लेना, तस्लीम कर लेना. A feather in one's cap. A feather in one's cap means किसी की टोपी में पर होना. मतलब उसने कोई ऐसा अच्छा काम या कोई कारनामा किया हो बाकी बंदों से कोई अलग तलग हो. Something to be proud of, जिसको उसको पहर हो. A feather in one's cap. A red letter day means an auspicious day. बहुत मुबारक दिन हो किसी की तो कह सकते हैं a red letter day in my life. Bag and baggage means sazu saman with all belonging. So guys, this was the end of this lecture. For such type of more videos, please subscribe my channel, and these idioms are specially for competitive examination, for PMS, CSS, and especially for the test of Tahsildar and Naib Tahsildar. Best of luck.